खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा. Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzoor. Once again, we are honored to present highlights from two virtual events that took place with Hadhrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper, last weekend. We begin with Saturday's event and take our respected viewers to Indonesia. Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, presided over a Lajna Indonesia National Amla meeting on Saturday. The meeting began with dua, followed by a video presentation on the activities of Lajna Imaila Indonesia. Following this, individual secretaries had the opportunity to introduce themselves and seek guidance. Assalamualaikum Huzoor. Waalaikumsalam. My name is Nisa Rahmania. I am a Muafin Sadr Wakifat now. All right. Do proper tarbiyat of these waqfat now. Yes. Each and every waqfa now should regular in offering their 5 daily prayers. They should read the Holy Quran every day. They should read some books of the Prophet Messiah which have been translated in Indonesian and other literature. And they should try to listen to my khutbah every week. Make sure that all waqfat now are well connected with the Jamaat system and they are connected with the Khilafat and they give more time in learning religious knowledge. Okay, next. Assalamualaikum Huzoor. Waalaikumsalam. My name is Isyanur Aisyah. I am Naib General Secretary. Jazakallah. Naib General Secretary? Acha, you help General Secretary Sahiba in preparing reports. So you make sure that every report which comes to you should be answered and acknowledged. Whether they are doing good job or not doing the job up to the mark, but they should be answered. If they are doing good job, then send them appreciation letter. If they need some comments to focus on some special particular departments, then you should ask them to give emphasis on these things, right? Okay, next. Next. At the end, there was a short questions and answer session. Huzoor, we need Huzoor guidance how to increase the members of participant in financial sacrifices. You see, you make them realize that the financial sacrifice for Jamaat is not a tax. It is the duty of every true believer that they should sacrifice for the sake of the Jamaat. And it is written in the Quran. Allah Ta'ala says, in the 2nd chapter, Surah Baqarah, Allah Ta'ala says that you should have Iman bil Ghaib and then offer your prayer and then do some sacrifice in the way of Allah. So, this is the commandment of Allah Ta'ala that you should pay some financial sacrifice for running the day-to-day expenses of the Jamaat and, of course, for spreading the message of Allah Ta'ala in the country in particular and in the whole world in general, right? So we are sacrificing for the sake of getting Allah's pleasure. So make them realize the importance of it. So there are quite a number of Quranic verses which says that this is the importance of financial sacrifice. And there are quite a number of khutbahs of previous khulafas and even my khutbat where I have explained in detail at length the importance of sacrifice. So if the people realize that what is the importance of sacrifice, then they will pay. But let them understand that this is not a tax. So if they sacrifice
happily and wholeheartedly, then Allah Ta'ala will reward them. Right? Right. Dear Huzoor, please kindly give us guidance on how we could improve members' interest in reading books of Hadhrat Masih Maud alaihi salam. Jazakallah. You see, you should try to pick some passages from the books of Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam, which are related to women and for day-to-day life. So then you increase the interest of the women, and especially those who are well educated and Nasrat, grown-up Nasrat of Mayar Kabir. Then they will develop some interest in it. You see, if you select some book for them to read the whole book, sometimes they may not develop interest in it. But if you just pick the passages on different subjects from different books, then they will develop their interest to read the books. So once they develop the interest, then they will start reading the other books as well. Right? Huzoor, we have organized public training for more than 800 members. However, some of them are not confident to deliver tabligh. Huzoor, please kindly provide. You see, you first train them and create confidence in them. Develop confidence in them. And make some syllabus, some course, and train them, ask them to read all these things. And so that they can answer basic questions while doing tabligh. Or if not, at least make some cassettes for tabligh and CDs. So give it to them. When they are doing tabligh, they can play those CDs. They will help them to learn, and also it will help them to do tabligh. So if you give some recorded CDs which contain the answers of all the questions raised by the non-Ahmadis or non-Muslims, so that in this way they will learn how to give the answer, and secondly, even they can play those CDs before those people, and they would also know that these are the answers of their questions. See? So in this way, you do some training classes. First you do some training classes and let them understand the true teaching of Ahmadiyya, the true Islam. Then when they learn the true teaching of the Ahmadiyya and the true Islam, then they will be able to do tabligh. But for that, they will have to develop some confidence in them, and that confidence can only be created and developed by training them. Right? They should repeatedly learn these things. Okay? All right. All right then. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. The following day, a second virtual event took place. This time, a mulaqat with more than 50 Arab Ahmadi Muslims living in Germany, including some new converts. The meeting began with tilawat, followed by a report. Assalamu alaikum, Huzoor. अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हुज़ूर आपकी हिदायत की रोशनी में शोबा तबलीग अरबिक डेस्क को दर्ज झैल तबलीगी व तरबीती सरगर्मियाँ मुनक़िद करने की तौफ़ीक मिल रही है। जर्मनी भर में इस वक्त 400 से ज़ायद अरब अहमदी बाकायदा निज़ाम जमात का हिस्सा बन चुके हैं, और इस सिलसिला में अरबिक डेस्क अरब अहबाब को लोकल सदर जमात और लोकल मुरब्बी सिलसिला के ज़रिए मुकामी जमात का फ़ाल हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है। मौजूदा हालात में चूँकि इस तरह तबलीगी मीटिंग्स नहीं मुनक़िद हो सकी, तो ऑनलाइन एक साल में 70 के करीब तबलीगी मीटिंग्स मुनक़िद की जा चुकी हैं। इसी तरह हॉटलाइन 24 घंटे फ्री चल रही है और उसमें मुख्तलिफ़ दोस्त सवालात करते रहते हैं।
इसी तरह इनफरादी तौर पर 210 तबलीगी मीटिंग्स मुनक़िद हुई। सोशल मीडिया ख़ुसूसन फ़ेसबुक पे जमात का एक पेज बनाया गया जिसके ज़रिए 4,31,000 अफराद तक जमात का पैगाम पहुँचाया गया। और इस वक्त जर्मनी में 20 से ज़ायद अरब अहमदी फ़ाल दाई अल्लाह हैं। और हुज़ूर इस साल अल्लाह ताला के फ़ज़ल से 7 बैतें भी हुई हैं, जो 3 बैतें आज इस महफ़िल में हुई हैं। इस वक्त हुज़ूर इस महफ़िल में तकरीबन 57 के करीब अरब हाज़िर हैं। 57 हाथ बैठे हैं, तो ये बेहतर नहीं मैं हर एक सौ अलहदा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम करता जाऊँ ताकि हर एक से बात हो जाए। जी हुज़ूर, जैसा आप मुनासिब समझें। चलो फिर। Following this, each person had the opportunity to personally speak to Huzoor and to seek his prayers and guidance. अस्सलामु अलैकुम शेख वालेकुम सलाम। अच्छा, मोहम्मद वलीद सलियान, ये तो पुराने अहमदी है। नहीं हुज़ूर, इन्होंने 2019 में वो जब हबश साहब आए थे उनके साथ ही उस वक्त बैत की। अच्छा, ठीक है, मैं देखा हुआ है ना, इसलिए मुझे पुराने लग रहे हैं। जी हुज़ूर, आपसे मुलाकात हुई थी। अच्छा, क्यों बैत कर ली इन्होंने? लिमाज़ा बाय لأن الأحمدية هي الإسلام। क्योंकि अहमदियत ही हकीकी इस्लाम है। फिर उसके बैत करने के बाद कोई तब्दीली भी पैदा हुई इनमें, या इनके घर वाले महसूस करते हैं इनमें कोई तब्दीली? بكل تأكيد هذا بشكل يومي. أعمل في التبليغ وأيضا كنت في سوريا إماما وخطيبا وأنا بصدد إعداد الكثير من المؤلفات. कहते हैं यकीनन और हर रोज़ वो मुशाहदा करते हैं। मैं तबलीग भी कर रहा हूँ और मैं सीरिया में इमाम भी था और चंद किताबों का मैं मुअल्लिफ भी हूँ। अच्छा, चलो फिर तशरीफ़ रखें। नेक्स्ट। السلام عليكم ورحمة الله. वालेकुम अकरम सलमान। أنا فلسطيني سوري، بايعت في سوريا عام 2014 أنا وأخي التوأم، وقدمنا هنا إلى ألمانيا في عام 2016 ونحن يعني الآن في ألمانيا مقيمون. ये दोनों भाई तवाम हैं, अकरम सलमान और मोहम्मद सलमान। 2014 में इन्होंने बैत की थी। हाँ, ये हर दफ़ा जब मैं दौरे पे जाता हूँ आए होते हैं और खड़े होते हैं, मुझे जब सी ऑफ करने के लिए भी आए होते हैं हमेशा, लेकिन उस वक्त इनकी दाढ़ी नहीं थी, अब दाढ़ी हो गई है। हाँ हुज़ूर, ये हमारा जो पेज है यही चला रहे हैं और दिन रात तबलीग में मसरूफ़ रहते हैं। माशाल्लाह, काफ़ी एक्टिव हैं माशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट। السلام عليكم ورحمة الله حضرة أمير المؤمنين. أنا فؤاد نزال من سوريا مقيم في ألمانيا. الحمد لله من الله علي ببيعة الإمام المهدي والمسيح الموعود منذ 2.5 تقريبا. हुज़ूर, ये 2.5 साल पहले कहते हैं बैत की है इन्होंने काफ़ी रिसर्च के बाद, और उसके बाद ये दिन रात तबलीग में रहते हैं। इन्होंने अपने तमाम अज़ीज़ रिश्तेदार जितने भी दोस्त हैं उनको हज़रत मसीह का पैगाम पहुँचाया है। और यहाँ पे इनके भाई रहते हैं, उन्होंने भी इनके ज़रिए से बैत कर ली। इनकी बीवी ने भी 3 माह बाद इनके बैत कर ली थी। और सीरिया में जो इनके वालदैन और इनके रिश्तेदार हैं उन्होंने भी इनकी तबलीग से 1 माह पहले सब ने 7 अफराद ने बैत की है। और एक चचा की बेटी हैं जो इंशाल्लाह कह रहे हैं कि 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद वो भी बैत कर लेंगी। और कोई एक भी ख़ानदान में से नहीं छोड़ा इन्होंने जिनको हुज़ूर हज़रत मसीह का पैगाम ना पहुँचाया हो। तो कुरान करीम की सही तालीम पे अमल कर रहे हैं कि अपने करीबी रिश्तेदारों से तबलीग शुरू करो। नाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। ओके, आगे दे दें। अस्सलाम वालेकुम हज़रत अमीर मोमिनीन। वालेकुम सलाम। माहिर सबाक़ साहब, आपके भी बच्चे भी अहमदी हैं? अकरमनी अल्लाह बि अस्नाई मिन औलादी बिल अहमदिया। 2 हुज़ूर इनके बच्चे कहते हैं बड़े अहमदी हैं। एक ये जो खालिद सब्बाग हैं ये इनके बेटे हैं, और 2 छोटे जो हैं वो कहते हैं अभी उम्र को नहीं पहुँचे, जब पहुँचेंगे लेकिन मैं तरबियत उनकी कर रहा हूँ। लेकिन बीवी अहमदी नहीं है। अच्छा, तो बीवी को भी अच्छे अखलाक दिखाएं, उसको प्यार से सलूक करें, वो अहमदी हो जाएगी। अल्लाह ताला फजल फरमाए। आगे दे दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम शाफी साहब, ये तो पुराने अहमदी हैं। यू आर एन ओल्ड अहमदी। नाम सैयद अमीरुल मोमिनीन। हुज़ूर 30 साल से ये अहमदी हैं और अल्लाह ताला दुआ की दरख्वास्त करें, अल्लाह ताला हमें हमेशा ईमान और ईकान में तरक्की दे। और जमात बर्लिन की तरफ से दुआ की दरख्वास्त करते हैं। ओके, अगो नेक्स्ट दे दें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।
अब्दुर्रहमान बदर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। पुराने अहमदी हैं, 26 साल हो गए, 25 साल हो गए। अच्छा, نعم، وأطلب من حضرتك الدعاء لأفراد الجماعة في اليمن، كما تعلم إنهم يعانون من ظروف قاسية، وألتمس منك الدعاء وأطال الله في عمرك. यमन के अहमदियों के लिए दुआ की दरख्वास्त याद रहते हैं, अल्लाह ताला फजल फरमाए उनके लिए भी, अल्लाह ताला फजल करे। चलो नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सय्यदी। वालेकुम सलाम। इयाद औदी मिन फिलिस्तीन। औदे साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। और आजकल क्या काम करते हैं? मैं इलेक्ट्रिक सो मसाजिद में और प्रिवातिन। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। चलो फिर नेक्स्ट। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أنا العبد لله أحمد العاقل من دمشق سوريا. अच्छा अच्छा माशाल्लाह। तो बैत क्यों की आपने? हुजूर कहते हैं 12 साल पहले सीरिया में जमात का तारुफ हासिल हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला ने तौफीक नहीं दी, और अब यहाँ जर्मनी में आके दोबारा जमात से तारुफ हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बैत कर ली। ठीक ठीक है, फिर नेक्स्ट को दे दें। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمير वालेकुम المؤمنين. अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। لؤي السليمان. अच्छा माशाल्लाह। लोई सुलेमान। अच्छा अच्छा, 2010 में बैत की है। अच्छा माशाल्लाह। बाकी फैमिली में भी कोई अहमदी हो गए, बच्चे वगैरह? الحمد لله زوجتي وأولادي. सब अहमदी हैं। बीवी बच्चे सब अच्छा, अहमदी हैं। अच्छा माशाल्लाह। चलो फिर नेक्स्ट। السلام عليكم أمير المؤمنين. वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद हमूद साहब। أنا محمد الحمود، عمري 32 سنة، متزوج ولدي 3 أطفال، وأريد أن أبايع اليوم إن شاء الله، وأن تدعو لي بالثبات. جزاكم الله. 3 बच्चे हैं हुजूर, और आज इन्होंने बैत की है अभी थोड़ी देर पहले। तो इन्होंने क्यों बैत की है, क्या वजह बनी? السبب أنني اجتمعت بأحد الأصدقاء ذو صاحب الخلق. हुजूर कहते हैं मैं अहमदी दोस्तों से मिला, उनके अखलाक से बहुत मुतासिर हुआ। उसके अलावा फिर फेसबुक का जो आपका पेज था वो मैंने देखा, उस पर मैंने जमाती तालीम, फिर मैं यूट्यूब पे जमात के बारे में रिसर्च की, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने मुझे यकीन अता किया। सिर्फ ये अखलाक, ये ना होना कल को किसी बद अखलाक अहमदी को देख के कह दें कि अहमदियत गलत है। इनको मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के पर पूरा यकीन और ईमान होना चाहिए कि वही मसीह महदी है जिसकी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई थी। ये ईमान पक्का करें अपना, क्योंकि अगर किसी बद अखलाक अहमदी को देखें तो उसको अपने अखलाक दिखाएं, ये ना समझें कि शायद अहमदियत की तालीम ही दिखावा है जो अखलाक दिखाते हैं। असल में तो वही अहमदी की तालीम है जो कि इस्लाम की तालीम है, और उस पर हर एक को कायम होना चाहिए, चाहे वो नया हो या पुराना हो। إن شاء الله سوف أقوم بذلك، وإن شاء الله مع أصدقائي محمد وأكرم سلمان والأخ محمد كيال، إن شاء الله سوف نتابع ذلك. मैं ऐसा ही करूँगा, और मेरे जो दोस्त अकरम और मोहम्मद सलमान और मोहम्मद कयाल हैं, इंशाअल्लाह उनसे भी मैं मुझसे रब्ता रखूँगा। ठीक, इंशाअल्लाह ताला। चले, वक्त तो आपने 1 घंटा 20 मिनट ले लिया, और बस तारफ़ ही हो सकता था इतने अरसे में, और बातें तो ज़्यादा हो नहीं सकती थी। जो छोटी छोटी बातें 2-4 फ़िक्रे बोलने थे वो बोल लिए। अब कभी छोटी छोटी मुलाकातें होंगी तो शायद तफसीली मुलाकातें भी हो जाएं, बाकी बातें भी हो जाएं। अब तो इतना ही वक्त था, इसलिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। Those were highlights from 2 virtual mulaqats that took place with Indonesia and Germany. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, continued his series of sermons on the life of Hazrat Usman Razila Tala Anho. Later, he announced a new Holy Quran website would be launched after the Friday prayers. Al-Islam ने कुरान सर्च की नई वेबसाइट का पहला वर्जन तैयार किया है, holyquran.io।
ये वेबसाइट अल इस्लाम से अलहदा देखी जा सकती है। किसी भी सूरत, आयत, लफ्ज़ या मज़मून को अरबी, अंग्रेज़ी या उर्दू में एक जदीद सर्च इंजन के ज़रिए तलाश किया जा सकता है और सर्च नताइज को अहमदी और गैर अहमदी तराजम के साथ भी देखा जा सकता है। हर आयत के साथ उसकी तफसीर, मज़ामीन और मुतलका आयात देखी जा सकती हैं। मज़ीद मवाद पर भी काम जारी है और इंशाअल्लाह अगला हिस्सा इसका जलसा सालाना UK 2021 तक तैयार किया जाएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा अल इस्लाम वेबसाइट पर कुरान पढ़ने, सुनने और सर्च की वेबसाइट readquran.app का भी नया दीदा ज़ेब वर्जन तैयार कर लिया गया है, जिसमें अंग्रेज़ी तफासीर के साथ तफसीर सग़ीर के नोट्स, अंग्रेज़ी लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमा, मज़ामीन का इंडेक्स और बहुत से मुफीद इजाफ़े जो रोज़मर्रा की तिलावत से कुरान में मुफीद होंगे शामिल किए गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये प्रोजेक्ट कुरान करीम की खूबसूरत तालीम को दुनिया में फैलाने का बायस बने और अहबाब जमात भी इनसे भरपूर फ़ायदा हासिल करने वाले हों। इसके साथ ही मैं पाकिस्तान के अहमदियों के लिए भी दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। अल्लाह ताला उनके भी हालात बदले, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। इसी तरह अलजायर के अहमदियों के लिए भी अल्लाह ताला उनको भी इस बात कदम अता करे और उनके हालात में तब्दीली पैदा करे। जी, सर्च को दबाना। बस हो गया। दुआ करनी, दुआ करनी। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।